हेलो गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। सो यार ये जो चैलेंजिंग सीरीज हमने स्टार्ट किए हैं फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। सो वी हैव नाउ सेकंड सेशन एंड yesterday also many of you joined and you all liked the session because we solved some good problems of amplitude modulation and angle modulation, and continuing that particular session and questions from the Proakis, I am bringing one more session on this topic of analog communication, random process, and random variable. And along with that, I will also take the questions of digital communication in the PCM part. So, how many of you are interested? Just quickly like the session and share the session with all of your friends because this is going to be a very important session for all of you. Yes. So, quickly share the session with all of your friends. So, just comment in the comment section, then we'll start the session. And yes, before starting the session, I would like to introduce myself. So, this is Saket Verma. I'm having more than 13-year experience, and I have done MTech from IIT Guwahati, and I have cracked the different PSU exam as well. As you all are aware, okay, as you all are aware about the latest vacancies came up by the Airport Authority of India, 496 vacancies, and the BEL has more than 100 plus vacancies. So you should go for these two exams if you are already prepared for the GATE examination, and if you are looking only for the MTech, then you should focus on the GATE exam only. Otherwise, if you are looking for the PSU job, then you should consider these two exams as well. An area of expertise electromagnetic theory, and we will also solve the textbook questions of electromagnetic theory, communication system, advanced communication system, signals and system, ICT. All these are the subjects where you can connect with me and ask the doubt from this subject. And along with that, we have our Telegram group also, individual faculties Telegram group. Here you can get the PDF of the session, or you, if you have any doubt regarding any particular topic, then also you can consider this as a uh, contact from my from with me, contact with me, right? So now coming to this scholarship test. So this 5th of November, on this Sunday, when the India South Africa match is also there, so that time we have also opened the window for your scholarship test, and this scholarship test will give you the 90% discount on your get 2025 preparation, or maybe scholarship if you want to take for the crash course. And we have a roadmap to secure the All India rank to 100 in Gate 2025. So this is the first question, and I would like to give you a few minutes to solve this question. Those who have joined the session to solve the problems, I would like to give you some. So I'm giving you. Yes, Anand.
The carrier CT is equal to A cos 2 pi 10 to the power 6t is angle modulated, with it may be a PM or FM, and it is done by the sinusoidal signal, single tone, and Kp and Km are given, and we have to find the modulation index for the phase modulation and the frequency modulation. Determine the bandwidth in each case. If the amplitude of the MT is decreased by a factor, yes, Vikram has also joined. Sorry, 315. Okay. 3 and 1.5 is getting. What about the second part and the third part of the question? Bandwidth, have you calculated? For PM3, FM6, yes. Bandwidth for FM is 7000. Okay, 14,000. Yes, Venkat, I will discuss the formula. I'm giving the time for the others to solve. Wait for 1 minute. I will discuss the whole question in detail. So if the amplitude is double, then repeat the part 1 to 2, and then it is also 1 to 2. Okay. Last few seconds. Yes.
Now let's begin the discussion. As some of you are looking for the formula also, so let's write first what is given. The carrier signal is given as a cos 2 pi 10 to the power 6t, that is the carrier, and the message signal is 2 cos 2000 pi t. Okay, and what is the next question? Kp 1.5 and kf 3000. Kp 1.5 and kf 3000. Okay, so very basic formula that you have to use first for, if I talk about for phase modulation. For phase modulation, first of all, modulation index is given by maximum frequency deviation divided by message signal frequency. That is the general formula whether it is FM or PM. Now we have to look for the delta F. So delta F is nothing but Kp upon 2 pi dmt upon dt. Okay, and if we want to calculate the maximum value, then it is Kp upon 2 pi maximum value of mod of dmt upon dt. So Kp upon 2 pi maximum value of message signal, that is your differentiation of 2 cos 2000 pi t. Okay, those who know the formula that can they can directly apply, but I'm just deriving it for those who are not aware about the formula. So this is 2000 pi maximum value of sine with minus mod of minus sine 2000 pi t. Okay, so because when you will take the mod and then it will become positive and then maximum value will be 1, so it will be 1000 and it is Kp into 2000. So this delta max will be Kp, that is 1.5 into 2000, and you will get 3 kilohertz, and hence the beta p will be delta F max divided by Fm, that is 3 kilohertz divided by 1 kilohertz equal to 3. So beta is 3. This is how you can calculate. For Fm, if I write, for FM, the frequency deviation maximum value is nothing but the kf into maximum value of message signal. So the kf into maximum value of message is 2 cos 2000 pi t. So this is 2 into kf and the kf is 3000. So 3000 into 2 will become 6 kilohertz. So this is the maximum frequency deviation. Now beta f will be delta f max divided by fm, and it is equal to 6 divided by 1 kilohertz, so it is 6. So this is the first answer. Got it, Venkat? Now, because the second part is saying about the bandwidth in each case. So if I calculate further here, the bandwidth of PM, the bandwidth of PM is nothing but 2 times of beta plus 1 into FM. So it is 2 times beta is 3 plus 1, FM is 1 kilohertz. So this is 3 plus 1, 4, 4 into 2, 8 kilohertz. Yes, and for FM, if I go, this is for FM, then it is 2 times of beta plus 1 into Fm, that is 2 times of 6 plus 1 into 10 to the power 3, that is 14 kilohertz. So yes, that is correct. 8 and 14, 14, yes, Tribhuvan. Okay, so this was the easy part, but the second, third part is important. If the amplitude of message signal is decreased by factor 2, if I am reducing the message signal amplitude decreased by factor 2, that means this delta F is going to be affected because you are decreasing the message signal amplitude by factor 2, that means it will become 1. So when it will become 1, it will be 1000. So now this is Kp into 1000. So 1.5 into 1000, that is nothing but a 1.5 kilohertz.
So now in the next case for PM, this delta F max is 1.5 kilohertz, right? Because the message signal amplitude, which was 2 previously, now it is reduced by factor 2. That means now the amplitude has become 1. ठीक है, अब एम्पलीट्यूड 1 हो गया है. सो नाउ मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो अभी भी आपका सेम है. तो अगर हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बीटा पी, सो इट वुड बी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय एफएम. So it is going to be 1.5, and bandwidth for PM, if I calculate, it is 2 times of beta p plus 1 into FM. So from here it is 2 into 1.5 plus 1 into 1 kilohertz. So it is 2.5 into 2, that is 5 kilohertz. Okay. So in this way you will get. Now similarly, if you calculate suppose for FM, so does it affect by the message signal amplitude? Yes, because in the delta F max here also the 2 is coming, because of this 2 is coming. So that means it is reduced by 2. So this 2 will gone. So this will become 3000. So 3 kilohertz. So now the delta F max will become 3 kilohertz. FM is again same, which is 1 kilohertz. So the beta F is nothing but the 3, and the bandwidth for FM would be 2 times of 3 plus 1 into 10 to the power 3. So it is 8 kilohertz. So 5 and 8. 5 and 8. Yes, Vikram has given the right answer. 5 and 8. What about Anant? Anant is not giving the answer. And Tribhuvan also not giving the answer. Means has not given the correct answer. ठीक है. So अब देख लो कहाँ पे mistake हुआ. Beta also reduced by half. Okay. So in the fourth part of this question, if the message signal amplitude is increased by factor 2, increased by message, if the frequency is increased by factor 2. So previously the frequency of the message signal was 1 kilohertz. Now we are increased to factor 2, that means 2 kilohertz. Now this frequency is increased by factor 2. So now whatever beta we have got, it will be half. Okay, it will be half. So again for PM, the beta directly, let's move into the beta. Beta is reduced by half. So it is 1 point, previously how much it was? Previously it was 3. So previously it was 3. So 3 divided by 2. 3 divided by 2, and hence the bandwidth. अच्छा बीटा आप ही बोले, ओके ओके, सॉरी. 3 एंड ओके ओके, थर्ड पार्ट ठीक है, सॉरी, मैं देख नहीं पाया था. सो 2 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू 1 किलो हर्ट्स. अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया है? 2 किलो हर्ट्स हो गया है ना, फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्स हो गया है. याद रखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में इफेक्ट आएगा तो चेंज हो जाएगा ये. सो 1.5, 2.5, 5 इंटू 2, 10 किलो हर्ट्स. सो 10 किलो हर्ट्स आया है. किसने दिया है 10 किलो हर्ट्स? नहीं दिया है. 10 किलोहर्ट्ज किसी ने नहीं दिया. एक बार चेक करो इसको, कैलकुलेशन को. ठीक है. और एफएम के लिए अगर देखेंगे तो बीटा प्रीवियस के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, फर्स्ट वाले केस के रिस्पेक्ट में. तो फर्स्ट के केस में बीटा पहले 6 था, और फ्रीक्वेंसी आपका हाफ हो गया, तो 3 हो गया बीटा. तो बीटा 3 हो गया तो यही आ जाएगा आंसर. तो फिर बीटा 3 हो गया, 6 था, 3 हो गया. ठीक है, यही आ जाएगा. अगर बीटा 3 हो गया है तो यही आ जाएगा आंसर इनके जैसे. देखो. यस. कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे साइड से तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लो. अगर कोई डाउट कहीं पे आ रहा है तो बता दो, तो फिर अपन उसको रेक्टिफाई भी कर लेंगे. ये थर्ड पार्ट है, ग्रीन वाला फोर्थ पार्ट है ना, ग्रीन वाला फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है.
ठीक है, एफएम आपका थ्री, एफएम के केस में बीटा की वैल्यू थ्री ही रहेगी। ठीक है, सभी का आंसर आ गया। चल, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई थिंक एक ठीक है, आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, मुझे लग रहा है कि इसमें एक पार्ट में क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि एम टू टी दिया है, एम टू टी को इसने कहीं पे कंसिडर ही नहीं किया है। एम वन लिखा है, ऐसा कैसे हो गया? अच्छा, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी है, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें मेंशन है क्या? ओके, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट, एक्चुअली इसका थर्ड पार्ट मैंने मिस कर दिया है। थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि मैसेज सिग्नल एम टू को लेके सॉल्व करना है। ठीक है, आप करो, फिर आज देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड पार्ट, आप सॉल्व करते रहो। 1.5, ओके। ये ये वैल्यू आपको दिख रही है ना यहाँ पे, 10 टू द पावर 5 है ये, है ना? किसी को अगर डाउट हो तो ये 10 टू द पावर 5 है। 1.5 megahertz is the instantaneous frequency first case में, okay? What is the maximum instantaneous frequency of the modulated signal? Then it is 1.5। दोनों आंसर सेम आया है, एक्सपेक्टिंग कि सही ही होगा।
ओहो, अपना टाइमर तो बंद हो गया। चलो, 4 मिनट हुआ था ना, 3 मिनट का टाइमर दे देते हैं। Okay, so here we have the first question. M1T is frequency modulated with the carrier 10 to the power 6 and frequency deviation constant 5. Then what is the maximum instantaneous frequency? So for the first part of this question, this is FM. So instantaneous frequency for FM is nothing but the FC plus KF into delta F. So if I want to calculate the maximum instantaneous frequency, then I have to calculate the maximum value of frequency deviation. Okay, because it only depends on this kf is constant, fc is constant. It is given as 10 raised to power 6 plus what is the value of kf? The value of kf is 5. The value of kf is 5. What is the massive signal amplitude? The maximum value of kf, not, wait, kf into mt. Kf into mt and maximum value of mt. So this is 10 raised to power 5. So now if you want to write in terms of 10 raised to power 6, so it is 1.5 megahertz. Yes, absolutely fine. And what is the other part of this question? Yes. If M1T is phase modulated, then maximum instantaneous frequency. M1T is phase modulated. So M1T is phase modulated. Second part of this question. What is the maximum instantaneous frequency? Fc plus Kp upon 2 pi dmt upon dt, the maximum value of slope.
So this is 10 raised to power 6. If I want to write the maximum value, then I have to calculate the maximum value of slope. So maximum value of slope. So 10 to the power 6 plus kp is 3. So 3 upon 2 pi, the slope. What is that slope? Slope is 10 raised to power 5. So you will get uh, 1. Suppose 10 raised to power 3, if I take common, then it is 100, 1000 plus 300 divided by 2 pi kilohertz. Okay, so what was you were getting? What was your answer? Second answer is 1047. Akansha, maximum or minimum instantaneous frequency? Okay, sorry. Yes, yes, it was minimum, I think. Where I read somewhere minimum. No, it is maximum only, na? It is asking maximum, maximum. Okay. In the second case, it is minimum instantaneous frequency. Also, it is asking. It is coming as 1.047. Okay. Yes, correct. If you write it in terms of megahertz, so 1.047 megahertz or 1.048. This is the answer for the maximum, and the minimum instantaneous frequency also if you want to calculate as it is given. So the minimum will be only there will be one change, that is 10 to the power 6 plus kp upon 2 pi, and now minimum value of the slope, and minimum value of the slope is dmt upon dt, and the minimum value of slope is minus 10 to the power 5. So only one change, there is a minus sign. So it is coming as 10 to the power 6 minus 3 upon 2 pi, uh, zero point 0.9. Yes, it is coming as 0.952 megahertz. 0.952 megahertz. It is not mentioning the question that in which unit we have to give answer. So yeah, no problem. You can calculate it in megahertz, kilohertz. It doesn't matter, because it is in a textbook questions. We are solving the textbook question, so it does not matter. Now the third part of the question, first, second we have done. If the M2 is frequency modulated, this is the frequency modulation is done. So third part is 40. It is saying instantaneous frequency and bandwidth we want to calculate. So this is the third part. Third part is instantaneous frequency is same, Fc plus Kf into maximum value of Mt, and the maximum value of sink is 1. So it is 10 to the power 6 plus 5 into 1. So Mt is 1 only. Okay, so this will be Kf. Kf is 10 to the power 3 in this case. So Kf is 10 to the power 3 in this case, because that's why the unit is somewhat different. Na? So yes. So if I take in kilohertz, then it is 1001 kilohertz. 1001 kilohertz. Anyone given answer? 1001, 101, 1.001. Akansha, 1.0101 is not the answer. Na? If you want to write in megahertz, then 1.001 megahertz. That would be the answer. Now the bandwidth is 2 times
Beta if I want to calculate, or delta f. Let's say delta f max, but it is still I need fm. Na? Delta f is this part, that is 10 to the power 3. What about fm? Fm is 2 into 10 to the power 4 pi divided by 2 pi, so 10 kilohertz. 10 kilohertz is fm, so fm is on 10 kilohertz, so 10 into 10 to the power 3. So 22 kilohertz. Bandwidth is 22. How many of you got the 40? Tell me, are you getting third part is getting? Are you getting the third part? If you have any doubt in the third part of this question, then please ask in the third part of this question. Beta you are getting less than 1. Beta getting less than 1. Okay, we need to check that also. Beta delta f upon fm. Delta f is 1 kilohertz, fm is 10 kilohertz. Yes. So beta is 0.1. So we have to consider it as a narrowband FM. So if it is narrowband FM, then the bandwidth will be not calculated in this way. So the bandwidth will become 2 times of FM, which is 20 kilohertz, right? So now the 20 kilohertz will be the correct answer for this, right? Now it is better, na? Because if it is numerical answer type, then the 20 and 22 make difference. But if it is then maybe in the MCQ, you will get your mistake. But here, आकांक्षा एम्पलीट्यूड के एएम के स्पेक्ट्रम में एम्पलीट्यूड का एफएम टू कहाँ है एफएम तो एफएम ये तो टू तो तुम्हारा सिंक में है ना सिंक के अंदर है ना अनंत इसको तुम पहले साइन 2 पाई इंटू 10 to the power 4t अपॉन 2 पाई इंटू 10 to the power 4t लिखोगे ना उसके बाद तो इसको कन्वर्ट करोगे विक्रम whenever beta is less than 1 if beta is less than 1 then you can consider it as a narrowband FM, especially when the beta is less than 0.248, especially when the beta is less than 0.248 to 0.248 only, na? Or 0.47. In fact, beta less than 0.47. In the signal to noise ratio, we discussed about this. Well, you take this part only, beta less than 1 itself is sufficient. Beta less than 1 itself is sufficient to tell that it is a narrowband FM and we can take the bandwidth as 2 FM. But if you go and if you want to exactly compare with the amplitude modulation, then in the noise in analog communication, we discuss about no improvement in the signal to noise ratio. There we calculate as beta value, which is 2 upon root 3. What is the 2 upon root 3? Let me check once. 2 upon root 3. Root 2 upon 3 maybe. I'm just forgetting the exact value. Yes, 2 upon root 3. So root 2 upon 3. So 0.47 will be more better way to calculate the consider this as a narrowband FM. Okay. If beta is less than 0.47, then it is completely behave as a AM only. And if it behaves as a AM, then we have to calculate the bandwidth in the form of AM, and that is your 2FM, that is bandwidth. Yes, Tribhuvan, 22 wrong होगा. 20 will be the
एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो 20 किलो हर्ट्स होगा, 22 रॉन्ग होगा, 22 रॉन्ग होगा। ठीक है। 22 would be wrong and 20 will be the exact answer for this question, because in this question the beta is less than 1. So this is very good point that Anant has raised. Nobody noticed, including me, that the beta is actually going less than 1. Okay, now let's solve this question. Yes, Venkat, 10 kilohertz for M2T. मीन आ गया। ओके। और व्हाट अबाउट द ऑटो कोरिलेशन, अनंत?
वन प्लस T1 T2। ठीक है, लगभग सही है। आई थिंक सही है, तो चेक कर लेते हैं। ओके, चलो। तो यार यहाँ पे वैसे तो आंसर गलत है अनंत आपका, बट ठीक है, कोई बात नहीं, वेल ट्राई। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो जो रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, ए और बी दोनों ही, ये दोनों आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए मीन वैल्यू कितना होगा, -1 और 1 अगर दिया है तो। ठीक है, अगर ये -1 है, ये 1 है, और ये मान लेते हैं x है। कोई भी पीडीएफ, रैंडमली पीडीएफ चूज कर रहा हूँ, ए और बी का है, बट ये हम लोग रैंडमली चूज किए। विड्थ कितना है, 2 है, तो 1/2 इसका पीडीएफ होगा। मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो यहां से आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। और यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -1 से 1 x इंटू 1/2 इंटू डी एक्स। जस्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जीरो आइडिया है ना, तो जीरो आइडिया के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। वैसे तो मुझे मालूम है कि इसका आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि a+b/2 मिड पॉइंट ही इसका मीन वैल्यू होगा। ठीक है, बट स्टिल 1/4 यहाँ पे अपन बाहर ले लेते हैं, और ये 1 माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, और ये मीन कितना आ गया, जीरो। तो मीन अगर जीरो है, यस, मीन अगर जीरो है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अगर मैं xt निकालूंगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a प्लस bt होगा। राइट, नाउ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a प्लस b, b इंटू, सॉरी, टी तो टाइम कांस्टेंट रहेगा, तो टी इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी हो जाएगा। टी तो कोई भी एक टाइम इंस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। सो इसका मीन जीरो, और इसका भी मीन जीरो है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ टी, ये आपका जीरो होगा। तो पहला जो आंसर है मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू जो है वो जीरो होगा। ठीक है, ये ए का मैंने लिखा है, बट ये एक्चुअली में एक्स लिखा हूं मैं, बट ये है किसका, ए और बी का। तो पहला जो आंसर है आपका मीन वैल्यू, वो कितना आएगा, जीरो। अब आते हैं हम ऑटो कोरिलेशन पे। सो ऑटो कोरिलेशन आपको बोला है आर एक्स ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, T1 और T2। तो अकॉर्डिंग टू द ऑटो कोरिलेशन फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 होगा। नाउ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 मीन्स a प्लस बी इंटू T1, फिर a इंटू बी, a प्लस बी इंटू T2। ठीक है, सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a² प्लस ए बी इंटू T2 प्लस बी ए इंटू T1 प्लस b² इंटू T1 T2। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a² लिख सकता हूं मैं इसको, T2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए बी लिख सकता हूं इसको, एंड देन वी कैन राइट T1 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी ए, and then T1 T2 would be common because it is a time constant. So expected value of b square. So what is expected value of b square? हाँ, टाइम कांस्टेंट है इसलिए तो बाहर है ना, टाइम कांस्टेंट है इसलिए उसका मीन बाहर है, उसका मीन कहाँ निकाले। ठीक है, टाइम कांस्टेंट है ना। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, एंड वन मोर स्टेप, a एंड b आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट है तो कितना आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी प्लस T1 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए प्लस T1 इंटू T2 एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। सो अगेन ए और बी का मीन तो जीरो है, तो ये दोनों टर्म तो आपके जीरो हो जाएंगे, है ना। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, देयर इज नथिंग बट द मीन स्क्वायर वैल्यू। सो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए और बी दोनों सेम ही आएगा। अब मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मीन स्क्वायर वैल्यू भी मैं पूरा निकाल के दिखा देता हूं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर जो होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, अगर एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स करके निकालते हैं, है ना, तो यहां से आ जाएगा -1 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू डी एक्स। सो यहां से आएगा 1/6 एक्स क्यूब, -1 से 1 मतलब 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 इसका मीन आएगा, मीन स्क्वायर वैल्यू, तो 1/3 प्लस T1 T2 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा ऑटो कोरिलेशन होगा।
1 by 3. Yes. 1 by 3. T वेरिएबल नहीं है, फॉर एनी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट T कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. कैन यू कमेंट ऑन whether it is a wide sense stationary or not? Can you comment on wide sense stationary or not? Now solve this.
ये दिस इज नॉट क्यूब हियर ना। आकांक्षा मीन स्क्वायर वैल्यू क्या चीज है? आकांक्षा मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या डाउट है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए मीन स्क्वायर वैल्यू बी स्क्वायर, हाँ वहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई थ्री, यस। तो वहीं से लिखेंगे तो भी वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू वन। अच्छा फिर तो तुम्हारा वन बाई थ्री, हाँ तभी तो आएगा ना, ठीक है। माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से वन का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस वन आ गया, यहाँ पे माइनस वन आएगा, सॉरी। वन का स्क्वायर ये बी हो गया, फिर एक वन है एक माइनस वन है, फिर एक माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री, तो यहाँ से वन बाय थ्री। मैं एक्चुअली ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, ऐसा सोच के। सॉरी, आज अचानक मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग रहा है। हाँ, डी क्यूब नहीं है ना, डी क्यूब नहीं, ये क्यूब नहीं है यहाँ पे। हाँ, और ये नॉट वाइड सेंस स्टेशनरी है, बिकॉज auto correlation is not a function of time, is not function of time delay। ठीक है, बिकॉज जो ऑटो कोरिलेशन है वो नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम डिले, दैट इज वाई। टू क्यों होगा? आकांक्षा, तुम गलत ले रहे हो, देखो। बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री है। ए की वैल्यू माइनस वन है, बी की वैल्यू वन है, सो बी का स्क्वायर किए वन का स्क्वायर आया। ए की वैल्यू माइनस वन है, बी की वैल्यू वन है, और ए स्क्वायर किए तो माइनस वन का स्क्वायर हुआ डिवाइड बाय थ्री, तो ये वन और ये वाला माइनस वन कैंसिल होगा, वन बाय थ्री आएगा। नहीं वेंकट, T1 T2 cannot be a time delay, T1 minus T2 would be the time delay। T1 और T2 का प्रोडक्ट टाइम डिले नहीं होगा, हम इसको T1 माइनस T2 जब आएगा ना तभी हम इसको मान के चलेंगे कि ये वाइड सेंस स्टेशनरी होगा, ठीक है। थ्री, एक थ्री है एक टू है, तो थ्री इंटू टू सिक्स ही आएगा ना हमेशा।
So this question is very much similar. This is YT is stationary. So yes, it is stationary because it is a LTI system. ओके, इसका अगर आप ओवरऑल निकालोगे एलटीआई सिस्टम आएगा ये, तो एलटीआई सिस्टम है तो अगर इनपुट स्टेशनरी है तो आउटपुट भी स्टेशनरी रहेगा, सिंस इनपुट स्टेशनरी। और क्योंकि ये एक एलटीआई सिस्टम है ना, फॉर एलटीआई सिस्टम इफ इनपुट इज स्टेशनरी देन आउटपुट इज आल्सो स्टेशनरी। ठीक है, नाउ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ वाईटी। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ वाईटी, ये तो आपका गेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट? आपने इसको सॉल्व किया होगा पहले, गेट में आ चुका है ये स्टेप, ये सेम क्वेश्चन। So what is the power spectral density? The power spectral density of Y, Sy of F will be H of F mod square into Sx of F। ठीक है, H of F कितना होगा? तो इसको तो चलो Sx of F लिख देते हैं। H of F का स्क्वायर करना है, ठीक है, मॉड का स्क्वायर करना है, तो एच ऑफ एफ पहले लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से वन आएगा, यहाँ से डिले आएगा, तो वन आ गया, और ई टू दावर माइनस जे टू पाई एफ टी, ये डिले हो गया, इसमें आपका डिफरेंशिएटर मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि जे टू पाई एफ, इसका मॉड निकालेंगे और फिर इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सो एस एक्स ऑफ एफ इज मॉड निकालने के लिए पहले रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। सो दिस इज वन प्लस कॉस जे, अरे क्या लिख रहा हूँ, कॉस टू पाई एफ इंटू टी माइनस जे साइन टू पाई एफ इंटू टी। ठीक है, इसमें आ जाएगा जे टू पाई एफ, इसका मॉड लेना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। एस एक्स ऑफ एफ इज, इसको जे टू पाई एफ से मल्टीप्लाई किए तो ये जे टू पाई एफ और वन प्लस कॉस टू पाई एफ टी, और यहाँ से आ जाएगा जे स्क्वायर हो गया माइनस 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 हो गया प्लस, तो यहाँ से भी आ जाएगा टू पाई एफ टी और साइन टू पाई एफ कैपिटल टी, इसका मॉड और फिर स्क्वायर। चलो मॉड निकालें तो इसका मॉड आ जाएगा, रूट ओवर करते तो रूट ओवर करते हो, स्क्वायर भी कर दिए तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, रियल पार्ट का स्क्वायर टू पाई एफ को कॉमन ले लो, रियल पार्ट आ जाएगा आपका साइन और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा कॉस टू पाई एफ टी। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टू पाई एफ टी, ये आ गया। अब इसमें आप एस एक्स ऑफ एफ, अच्छा इसका स्क्वायर किए तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा कॉमन निकालने के बाद, तो ये आ जाएगा फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और इन ब्रैकेट इन दोनों को ओपन कर दो, ये कॉमन था ना, तो इसको थोड़ा सा मैं ब्रैकेट गलत लगाया हूँ, ये वाला कॉमन था, ये ब्रैकेट यहाँ कर लो, ये ब्रैकेट यहाँ कर, तो ये इसका स्क्वायर। ठीक है, नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस साइन स्क्वायर टू पाई एफ टी, तो ये हो गया, ये हो गया वन प्लस वन टू एस एक्स ऑफ एफ फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, वन प्लस वन कितना हो गया, ये वन प्लस वन टू, टू भी कॉमन निकाल लो तो एट आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस कॉस टू पाई एफ टी। देखो ये आंसर आ रहा है आपका, क्योंकि इतना तो आप लंबा चौड़ा टाइप नहीं कर पाए होगे। yt का इक्वेशन नहीं लिखना है, yt लिखोगे तो फंस जाओगे। ठीक है वेंकट, डोंट राइट द इक्वेशन ऑफ yt, वी हैव टू डायरेक्टली कैलकुलेट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ y, that is by the relation of the power spectral density between input and output. Is it correct? Okay, now it is also saying that in the third part of the question, the second is done, first is done. Third part is what frequency component cannot be present in the output process? Which component cannot be present? So the component, the value of the frequency which is making the whole equation zero. So f
equal to 0. If f equal to 0, then S Y F is 0. Hence, F it cannot be present at the output. Means the frequency component which cannot be present is F equal to 0 cannot be present, because when the F equal to 0, that is for DC, the output will be 0. And F cannot be the 1 upon 2t plus k times of t. The f cannot be this also. When you put f is equal to this, now k is integer. So if k is integer, let us say 1, then it will become 1 upon 3t. It will be better to write 1 upon odd multiple of pi. F is equal to odd multiple of pi upon t. If I write like this, then also it is correct. Okay, that it would be more better and appropriate, right? Because when we put f is equal to 2n plus 1 upon t, then this t and t will get cancelled and we will get the f is equal to odd pi we have to remove from here. If I don't take pi, then what will happen? This t and t cancel, and it will be 2n plus 1. So it will make it as odd. So if I put n, so 3 into 2 6, it is even. Okay, so it will become even. So we have to consider this. See, we have to consider in this way. You have to make all these values as odd value. This should be the odd multiple. When it is odd multiple of pi, then it will become minus 1, and when it will become minus 1, this 1 minus 1 will also be 0. So we will take this 2 pi ft is equal to 2n plus 1. It should be odd. Odd multiple of what? Pi. So this pi and this pi will get cancelled. So we will get f is equal to 2n plus 1 upon 2t. So from here I will say n upon 2t plus 1 upon 2t that I had written previously. So this frequency component will also be not present. Third part, Anand, I am saying that the output, first of all, understand the question, what frequency component cannot be present? So the component of frequency will not present, which will make the output 0. So which one will make the output 0? When the yt will be 0. The yt will be 0 when its power spectral density is 0. Or you can say vice versa. Whenever the yt is 0, its power spectral density will also be 0. So power spectral density will be 0 for f equal to 0. So if f equal to 0, power spectral density is 0, that means yt is 0, so frequency will not be present. And the second case, and this is the second case, this is the first case. So second case is that when the term inside the bracket will become 0. So how this term inside the bracket can be 0? When this cos will become the odd multiple of pi. So when this cos will become odd multiple of pi, its value would be minus 1. And when it will be minus 1, this 1 minus 1 will become 0, because there is a 1 in the bracket, and 1 minus 1 will become 0. So we will make this cos 2 pi ft equal to odd multiple of pi. So from here I will calculate the value of frequency. So this is the value of frequency for which this power spectral density becomes 0, or I would say the yt will become 0. हुआ? अनंत क्लियर हुआ ये?
ठीक है। चल, ये वाला क्वेश्चन तो चलो कर लो इसको भी। फर्स्ट पार्ट इसका करो पहले, फिर देखते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्चुअली सेकंड पार्ट थोड़ा ज्यादा लेंदी है, थोड़ा लेंदी मतलब ज्यादा क्या, 5 मिनट्स काफी है। हाँ, एस वाई एफ को जीरो करना है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो प्रेजेंट नहीं रहेगा पूछा है। तो कौन सा फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं रहेगा? जब आउटपुट प्रेजेंट नहीं रहेगा। और आउटपुट कब प्रेजेंट नहीं रहेगा? तो जब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है, मतलब आउटपुट प्रेजेंट नहीं है, बोल सकते हैं सर। 2 मिनट्स लेफ्ट आया।
यस त्रिभुवन, 20 मिलीवॉट सही तो था, क्यों क्यों हटा दिया इसको? सही था आपका आंसर। देखो, सॉरी। ये ऐसा टाइप का पीडीएफ बनेगा ये इनपुट नॉइस का। तो एस एन ऑफ एफ ये बन जाएगा एफ एट एफ इक्वल टू जीरो। अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो होगी तो 10⁻⁻8 यानी कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा एट एफ इक्वल टू जीरो। और जब ये एफ की वैल्यू, दिस एफ वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस एफ इज 10⁻8, सो 1 - 1 जीरो आएगा, मतलब यहाँ पे ये 10⁻8 है। या आप इसको बोल सकते हो कि ये 100 मेगा हर्ट्ज है। तो इसका मतलब है कि -100 मेगा हर्ट्ज यहाँ पे आएगा। ठीक है। और हमको जाना है 51 मेगा हर्ट्ज तक, है ना? तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे निकालते हैं, ऐसे। यहाँ पे अगर मान लो 51 मेगा हर्ट्ज में लूँ, 51 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, तो 51 मेगा हर्ट्ज में इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁻8, वन माइनस, ये मेगाहर्ट्ज में लिख रहा हूँ मैं इसको, तो 10⁻8 को मैं 51 मेगाहर्ट्ज लिख लिया। ये 51 × 10⁻6 हो गया, डिवाइडेड बाय 10⁻8। ये वैल्यू कितनी आएगी? एक बार चेक करो इसको, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, डायग्रामेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ। 0.49, सो 0.49 इंटू 10⁻⁻8, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है ये 0.49 इंटू 10⁻⁻8 है। तो -51 में और +51 में ये वैल्यू होगी। 51 मेगाहर्ट्ज की बात कर रहा हूँ। और 49 में कितना होगा? अगर मैं यहाँ पे 49 में निकालता हूँ, 49 में ये मेरे ख्याल से 0.51 हो जाएगा। तो 49 कर देते हैं, तो 49, हाँ 0.51, मतलब जस्ट बड़ी वैल्यू है। तो 0.51 इंटू 10⁻⁻8, ये वाला, ये आ जाएगा 49 मेगाहर्ट्ज। ये आएगा 49 मेगाहर्ट्ज में, तो ये तो 51 में है ही। चलो देखो एक बार मुझे बताओ कि यहाँ तक सही है क्या? हाँ, पहले तो इतना समझ जाओ। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? एक्चुअली हुआ क्या कि ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आया। मैं ये वैल्यू इसलिए निकाला बिकॉज जो मुझे बैंड पास फिल्टर दिया हुआ है ना, जो मुझे बैंड पास फिल्टर दिया हुआ है वो मुझे 49 से 51 दिया है। 49 से 51 दिया हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं इसको ग्राफिकली ही निकाल लूं। तो 49 और ये 51 ये मेगा हर्ट्ज में है, तो मैं वैसे ही निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही सॉल्व करूंगा ऐसा, कि आएगा कि नहीं आएगा। वैल्यू तो आएगी बट देखते हैं। ठीक है, सेंटर फ्रीक्वेंसी 50 है ना, सेंटर फ्रीक्वेंसी आपकी 50 है। तो देखो यहाँ 49 से 51 वाला सिग्नल पास होगा, मतलब इतना सिग्नल आपका पास होगा, ये कंफर्म हो गया, ये वाला जो पार्ट है। अब इसका वैल्यू मुझे निकालना है, तो ये हाइट और विड्थ सब आ जाएगा इसका।
ट्रायंगल बन जाएगा। यहां तक सही है? बताओ मुझे पहले, यहां तक समझ में आया विक्रम? डू यू अंडरस्टैंड दिस? एंड अनंत ऑल्सो, त्रिभुवन का तो आंसर सही है। विक्रम, हैव यू गॉट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दैट इज गिवन टू मी, मैंने उसको ड्रॉ कर लिया, विच इज ओनली रेंजिंग फ्रॉम -100 मेगाहर्ट्ज टू 100 मेगाहर्ट्ज। ओके, दैट्स करेक्ट। बट इसको मैंने क्या किया कि क्योंकि मैंने देखा कि ये बैंड पास फिल्टर से पास हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ द बैंड पास फिल्टर विल पास इट फ्रॉम 49 टू 51। तो 49 से 51 तक पास हो रहा था, तो मैंने इसको 49 पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 51 पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और इससे मेरा एक डायग्राम बन जाएगा। मेरे को इंटीग्रेशन से बचना था, एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था कि मैं इंटीग्रेशन से बच सकूं। तो वो ध्यान में रखते हुए मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। अब देखते हैं कि कुछ गलती तो नहीं है, हाँ। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक ट्रेपेजॉइड बन गया हमारे पास। ये ट्रेपेजॉइड बन गया, इसका इजिली हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है ऊपर वाला, वो 0.51 इंटू 10 टू द पावर -8 आया था। और ये जो नीचे वाला जो वैल्यू आया है, ये 0.49 इंटू 10 टू द पावर -8 आया है। ये 49 है, ये 51 है, सब मेगाहर्ट्ज में चल रहा है। ठीक है, ये एक्सिस पूरा मेगाहर्ट्ज में चल रहा है। -49 है और ये -51 है। तो इसका एरिया निकालते हैं। पावर होता है एरिया अंडर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ठीक है, एरिया अंडर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द एरिया, टू टाइम्स कर लेंगे। तो ये ट्रेपेजॉइड है, दोनों का पैरेलल साइड मालूम है, मुझे मालूम है बिल्कुल। सो कितना आ जाएगा? 1/2 पैरेलल साइड का एडिशन, यानी कि 0.49 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस 0.51 इंटू 10 टू द पावर -8 मल्टीप्लाइड विद दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, विच इज 2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। 0.49 और 51 भी आपका कितना हो गया? 100 हो गया, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, मतलब मेरे पास 10 टू द पावर -8 आ गया, इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 आ गया। सो फाइनली मेरे पास 2 इंटू 10 टू द पावर -2, या फिर आप इसको बोल सकते हो 20 मिली वॉट। सही है? आकांक्षा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते मतलब क्या नहीं आते? तुमको नहीं आते कि गेट में नहीं आते? तुमसे सॉल्व नहीं होते, ऐसा बोलना चाह रहे हो? गेट में तो यही सेम क्वेश्चन आ चुका है ना, बस वैल्यूज अलग थी। गेट में यही क्वेश्चन एज इट इज आया था, बट वैल्यू अलग थी। अच्छा, आपको समझ में नहीं आता? हाँ, तो आपको समझ में नहीं आता तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि देखो, मेरा कोई लेक्चर पड़ा होगा यूट्यूब में, अगर रैंडम प्रोसेस और रैंडम वेरिएबल पे, तो मेरे को लगता तो नहीं ऐसे है, अवेलेबल तो नहीं है। बट अब इस पे मैं ऐसा ऐसा हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज फ्री में हम यहाँ पे ऐप, अगर आपके पास बाजूस एग्जाम प्रेप ऐप है तो ऐप डाउनलोड कर लो। बाजूस एग्जाम प्रेप का अगर ऐप है आपके पास तो ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में ना आपको मैं सारे, जो भी आपके पर्सनल कोई पर्टिकुलर टॉपिक के डाउट हैं, तो आप मेरे से टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो जाओ और ऐप डाउनलोड कर लो। तो मैं आपको ना उस पर्टिकुलर जो इस भी टॉपिक पे डाउट है, कम्युनिकेशन, ईएमटी, सिग्नल, ये 3 सब्जेक्ट में, अगर गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर ये तीनों में से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है, तो मैं उस टॉपिक का एक सेपरेट सेशन ले लूंगा स्पेशली आपके लिए। तो जो भी स्टूडेंट मेरे से टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट होता है और अगर मेरे को बोलता है कि सर ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक मेरे को नहीं समझ में आता है, एंड प्लीज मुझे समझा दो, तो मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करो, ऐप डाउनलोड कर लो। अगर नहीं किए हो तो उसका एक सेशन में क्रिएट कर लूंगा, स्पेशली आपको समझा दूंगा वो एक पूरा टॉपिक। तो वो चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये सेकंड वाले पार्ट में ना हमको इंटीग्रेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो इसमें एच ऑफ एफ जो है, जो फिल्टर है, वो भी फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वो भी वेरी कर रहा है।
49 से 51 तक ये वेरी कर रहा है। अभी आइडियल फिल्टर नहीं है, आइडियल फिल्टर में ये फ्लैट रिस्पॉन्स बना दिए थे हम। अब वो 49 से 50 के बीच ये खुद अपने आप में एक ट्रायंगुलर टाइप का शेप लेके चल रहा है ना, ये कुछ इस टाइप का ऐसा शेप बन रहा होगा या ट्रायंगुलर ही बन रहा होगा। ठीक है, तो देख के आपको दिख ही रहा है ट्रायंगुलर ज्यादा दिख रहा है, सिमिलर टू ट्रायंगुलर है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर सेकेंड पार्ट इसका सपोज सॉल्व करना है, तो सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको आउटपुट का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, the output power spectral density will be equal to h of f mod square into SNIF, ये करना पड़ेगा। सो द SNIF का इक्वेशन यू हैव, दिस इज द SNIF, दिस इज द इक्वेशन you have, right? So you can write this as 10 to the power minus 8 1 minus mod f upon 10 to the power 8 you have, multiplied with what, h of f. What is h of f? Mod f minus 49 into 10 to the power 6. So mod f minus 49 into 10 to the power 6, ये आपके पास हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एंड this integration or this power spectral density will be defined only between 49 to 51 megahertz, right? Because it is given that this frequency range is from 49 megahertz to 51 megahertz. So this overall power spectral density will be defined only from 49 megahertz to 51 megahertz. So after that you have to integrate it. So power निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 49 से 51, मॉड दिया है, यस, सो मॉड दिया है तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे -49 मेगाहर्ट्ज से -51 मेगाहर्ट्ज तक पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये एक हो जाएगा। और एक बार आप इंटीग्रेट करोगे 49 मेगाहर्ट्ज से 51 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। तो एक बार ये माइनस है तो माइनस साइन लेके यहाँ पे वैल्यू लिख लेना, ये निगेटिव रेंज लोगे तो ये एफ मॉड एफ की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ये 1+8 हो जाएगा, ठीक है। तो -49 से -51 मेगा में, शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, 1+f अपॉन 10⁻8 हो जाएगा और ये माइनस साइन आ जाएगा, तो -f -49 इंटू 10⁻6 df, ये हो गया, प्लस 49 मेगाहर्ट्ज से 51 मेगाहर्ट्ज तक 10 टू द पावर -8 1 माइनस f अपॉन 10 टू द पावर 8 हो जाएगा और f -49 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा। आंसर मैं बता देता हूं, आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आना चाहिए आपका, कहाँ है इसका आंसर मेरे पास, 2 into 10 to the power 4, 2 into 10 to the power 4 minus 4/3 into 10 to the power 2, देखना है इसको थोड़ा सा सॉल्व करके, -4/3 into 10 to the power 2, ऐसा कुछ आ रहा है आंसर। अब इसको पूरा सॉल्व करके नहीं लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है आंसर, तो इस टाइप का कुछ आंसर आएगा, तो यू कैन सॉल्व दिस, राइट। तो अगर फिल्टर को देखना, फिल्टर भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो सकता है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये फ्लैट वाला तो फिल्टर में क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर फिल्टर का रिस्पॉन्स आपका वेरिएबल होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ साथ चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं है, अगर आइडियल नहीं है, तो कैसे सॉल्व करना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यार आज ना अपन इतना ही करते हैं, क्योंकि 9 o'clock को फिर से मेरी एक क्लास है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहा है, तो मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल डाउनलोड रजिस्टर कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, ठीक है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। और दूसरा चीज आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। तीसरा चीज आपका विजन गेट 25, अगर आप 25 के एस्पिरेंट हो या 26 के एस्पिरेंट हो, तो आप अपने इस नंबर पे कॉल करके पूरा डिटेल ले सकते हो कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या है फीस एंड ऑल एक्सेट्रा, क्या क्या चीज आपको मिलेगा, क्या स्कॉलरशिप टेस्ट हो मिलेगा, क्या क्या स्कॉलरशिप टेस्ट आप अवेल कर सकते हो। और ये टेलीग्राम ग्रुप है ना, तो जिसको भी मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम के थ्रू मेरे से जुड़ जाना, तो मैं उनका सेपरेटली डाउट क्लियर कर लूंगा, तो वो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे आज। और नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को, ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे को हमारा सेशन होगा और फ्राइडे को सेशन होगा, इसमें भी आपके कम्युनिकेशन के चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहेंगे,
ठीक है, इसमें भी आपके कम्युनिकेशन के ही चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेंगे। और इस बार जो टेक्स्ट बुक हम फॉलो करेंगे वो बीपी लाठी की बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, बीपी लाठी की बुक को फॉलो करेंगे। We will do next week, Thursday, Friday at 7 p.m. We will solve the question of the बीपी लाठी। सो गुड क्वेश्चन, जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे बीपी लाठी के। और अगर सपोज करो बीपी लाठी में बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं मिले, तो हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन है प्रोकिस के वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप निश्चिंत रहो, बस आप सेशन में लाइव आ जाएगा। ओके, थैंक यू।